Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। एज आई मेंशन इन द प्रीवियस सेशन आल्सो, हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन पार्ट 1। नाउ लेट्स मूव इनटू द पार्ट 2 एंड कौन कौन से फंक्शन पार्ट 2 में है उनका ये लिस्ट है। बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप एक कॉमन चीज को नोटिस कर पाओ यहां पे, तो ईच एंड एवरी फंक्शन स्टार्ट्स विथ इज। ये देखो, राइट? सो व्हेन एवरी फंक्शन इज स्टार्टिंग विथ इज, हम लोग वहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज इट हैविंग दिस प्रॉपर्टी और नॉट, एंड उस हिसाब से पाइथन इंटरप्रेटर इज चेकिंग द स्ट्रिंग्स एंड रिटर्निंग अस आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट? सो सारे के सारे फंक्शन का आउटकम हम लोगों को ट्रू या फॉल्स में ही मिलने वाला है। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट कि कैसे कैसे फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल, इज अल्फा न्यूमेरिक, जो स्ट्रिंग हम लोग चेक कर रहे हैं वो उसमें जो कैरेक्टर्स है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं, मतलब अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स अलाउड, but special characters are not allowed. Then only that particular string can be treated as what? Alphanumeric. Next to that, is alpha. Is alpha में obviously we are not going to allow numbers into that particular string. तो मुझे अगर चेक करना है कि मेरे स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, then only that string is accepted. Otherwise, it should go on returning false. Next to that, ये तीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। is decimal, is a digit, is न्यूमेरिक। हम लोग ये 5 फंक्शन का डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट देखने वाले हैं, तब जाके ये क्रिस्टल क्लियर होंगे। एंड डेफिनेटली पाइथन में जब इसके साथ काम करेंगे तो और भी क्रिस्टल क्लियर होने ही वाले हैं, राइट? नेक्स्ट टू दैट, समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी वांट टू गो ऑन checking whether certain entity is an identifier. So identifiers मतलब the string which cannot starts with numbers or some special characters, that are the rules for what? Identifier. So हम लोग किसी चीज को, किसी स्ट्रिंग को चेक भी कर सकते हैं कि ये आइडेंटिफायर है या नहीं। समटाइम्स यू नीड टू गो ऑन चेकिंग कि कोई स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं, या कोई स्ट्रिंग अपर केस में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, if you are accepting the email from the user through the GUI, फॉर्म में यूजर ने ईमेल डाल दिया तो ईमेल चाहिए कौन सा केस में? लोअर केस में। उसका नाम चाहिए कौन सा केस में? ब्लॉक लेटर्स में। सो वहां पे ये दोनों फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। एंटर किया हुआ चीज, इज इट इन लोअर केस? यस तो ट्रू रिटर्न करेगा, नो तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लाइक दैट। नेक्स्ट टू दैट, स्ट्रिंग में कोई प्रिंटेबल कैरेक्टर है या नहीं, और ऑल द कैरेक्टर्स आर प्रिंटेबल और नॉट, so that we can go on checking with the help of what? Is printable, is a space, string में कोई space available है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं, and is title says that the string is in title case or not. बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, चेक करना है वन बाय वन कैसे उसको। एंड वंस यू अंडरस्टैंड हाउ 1 and 2 functions of this category works, you can go on checking all of them, right? So let's move into the first detailings about this 5 things, right? उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर इंटरव्यू एज वेल एज इन योर टेक्निकल टेस्ट आल्सो। सो यहाँ पे सेपरेट टेबल्स के अंदर हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स। सो यहाँ पे इज अल्फा एंड इज अल्फा न्यूमेरिक, वो फंक्शंस को पहले देखते हैं, राइट? सो इज अल्फा न्यूमेरिक चेक्स इफ ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक, मतलब क्या क्या अलाउड है? लेटर्स भी अलाउड, नंबर्स भी अलाउड, राइट? सो यहाँ पे द स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर एंड 0 to 9, राइट? सो एटलीस्ट 1 कैरेक्टर का स्ट्रिंग तो होना ही चाहिए, राइट? ओके, सो लेटर्स एंड डिजिट्स, सो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज 1 2 3 ABC इज अल्फा न्यूमेरिक, डेफिनेटली इसका आंसर मिलने वाला है ट्रू, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, इज अल्फा क्या अलाउड नहीं है? सो यहाँ पे डिजिट्स अलाउड नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ व्हाट इज अलाउड? लेटर्स अलाउड। तो अगर आपके स्ट्रिंग में कोई भी डिजिट प्रेजेंट है, so that is not allowed, any other special character that is present, that is not allowed in this। सिर्फ एंड सिर्फ क्या चाहिए? अल्फाबेट्स ही चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, इज अ डेसिमल। तो डेसिमल डिजिट्स कौन से है? 0 से लेके 9 तक, वेरी कंस्टेंट फंक्शन। अगर आपके स्ट्रिंग में सिर्फ डेसिमल है 0 से लेके 9 तक, then only this particular function is going to return
ट्रू, एल्स इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट, फॉल्स, राइट। ओके, तो इसमें क्या क्या अलाउड नहीं, सो प्लीज ऑब्जर्व, डज नॉट अलाउ फ्रैक्शंस, मतलब 0.9, इसमें तो डेसिमल है, बट दिस पॉइंट इज ऑक्युपाइंग वन ऑफ द कैरेक्टर विद इन योर स्ट्रिंग, सो इज डेसिमल से इसको फॉल्स मिलना मैंडेटरी है, राइट। ओके, निगेटिव्स आर नॉट अलाउड, और सुपरस्क्रिप्ट एज वेल एज सबस्क्रिप्ट, मतलब 2 to 3, 2 to 3 में 2 भी डेसिमल 3 भी डेसिमल, बट ये 3 जो है वो सुपरस्क्रिप्ट के रूप में काम कर रहा है, सो दैट इज नॉट बीन अलाउड इन व्हाट इज डेसिमल फंक्शंस, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि और भी 2 फंक्शंस है, इज डेसिमल के बाद नया फंक्शन आता है, दैट इज व्हाट इज डिजिट एंड फिर इज न्यूमरिक। सो लेट्स सी, लाइक इज डेसिमल तो देख लिया, कंस्टेंट है 0 से लेके 9 तक, तो इज डिजिट में व्हाट इज अलाउड, चेक इफ ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट, क्या क्या अलाउड है, 0 to 9 अलाउड है, एज वेल एज यहाँ पे आपके सुपरस्क्रिप्ट एज वेल एज सबस्क्रिप्ट नंबर्स भी अलाउड है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज वर्किंग along with decimals, it goes on working with superscript में अगर डिजिट है, सबस्क्रिप्ट में अगर डिजिट है, that is also allowed, and this function is going to return true for that cases also, right? Okay, next to that, अगर हम लोग is numeric के साथ चले तो मुझे चेक करना है वो स्ट्रिंग न्यूमरिक रिजल्ट दे सकता है या नहीं, तो डेफिनेटली 0 to 9 अलाउड, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी अलाउड, एज वेल एज रोमन न्यूमरल्स, फ्रैक्शंस, superscripts, subscripts and other numeric Unicode characters are allowed. So can I say that यहां पे न्यूमरिक फंक्शन का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है, उससे कम थोड़ा स्कोप किसका है, इज डिजिट का, एंड सबसे लिमिटेड स्कोप इज व्हाट इज डेसिमल का. सो दिस इज हाउ दिस 5 फंक्शन वर्क्स. सो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आपको सही से फंक्शन को सिलेक्ट करना है. सो लेट्स गो ऑन समराइजिंग दिस, हाउ दिस गोज विद, एंड यहां पे समराइज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस. इज अल्फा न्यूमरिक चेक्स फॉर बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, पर अलाउड क्या नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, एज वेल एज स्पेसेस भी अलाउड नहीं है. नेक्स्ट टू दैट, इज अल्फा ओनली अलाउज लेटर, ये नंबर भी अलाउ नहीं करेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउ नहीं करेगा. इज डेसिमल वेरी स्ट्रिक्ट, अलाउइंग ओनली 0 to 9 डिजिट्स, राइट. इस डिजिट में 0 to लाइक डिजिट लाइक कैरेक्टर सारे के सारे अलाउड है, वो चाहे सुपरस्क्रिप्ट में आए या सबस्क्रिप्ट में आए, राइट. ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट इज न्यूमरिक में यू विल फाइंड मोस्ट फ्लेक्सिबल. रोमन कैरेक्टर का कन्वर्जन भी न्यूमरिक के हिसाब से ही हम लोग कंसिडर करते हैं. दोज आर आल्सो अलाउड, 0 to 9 इज अलाउड, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अलाउड, as well as some Unicode values which goes on resulting numeric results that are also allowed with this. So this is how you can go on differentiating between this. Sometimes it happens like technical test mein the question is raised against these 5 functions. So you need to identify its features and accordingly select the right and proper answer. So let's move into the detailings about how in the PyCharm we can go on checking this particular functions, how they works and how they behaves. So we are back into the PyCharm and I'll go with the new Python file as let us say demo 41 and यहाँ पे टाइटल में देंगे part 2 of string manipulation built-in functions, right. बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट. Few functions only I am going to cross check into this program. Rest of the things you can definitely do it by yourself also. So let's go on checking the first thing, that is I'll go with directly print and यहाँ पे डबल कोट्स में लिखते हैं 1 2 3 प्रसाद, राइट. डॉट मैं इसको चेक करना चाहता हूं, इज इट अल्फाबेट, इज ऑल द कैरेक्टर्स विद इन दिस आर अल्फाबेट. सो अगर आप ध्यान से देखते हो
1 2 3 आर नॉट अल्फाबेट्स, दे आर डिजिट्स, राइट? तो इस फंक्शन ने हम लोगों को रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? नेक्स्ट टू दैट इफ आई गो विथ प्रिंट एंड यहाँ पे करते हैं 1 2 3 एंड आई गो विथ प्रसाद डॉट करके आई गो विथ इज अल्फा न्यूमेरिक, राइट? तो अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, तभी ये चीज कहेगा ट्रू. सो प्लीज ऑब्जर्व दैट दिस गिव्स अस ट्रू, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट इफ आई गो विथ प्रिंट एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड डॉट करके इज डेसिमल, right? This is going to return a true for you, right? But the moment you say 123.456, it is, let's see like what it returns, and it goes on returning what? False. क्योंकि यहाँ पे डॉट करके कैरेक्टर है which does not fit into 0 to 9, ये चीज है, राइट? ओके, तो ऐसे आप इसको टेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे एक पार्टीशन रखते हैं ऐसे कुछ, राइट? नेक्स्ट लेट्स गो ऑन चेकिंग इज प्रिंट एंड यहाँ पे प्रसाद डॉट इज लोअर, लोअर है क्या ये? यस, ट्रू दे दिया. एंड इफ आई पुट वन ऑफ द कैरेक्टर एज, इस स्ट्रिंग में वन ऑफ द कैरेक्टर एज पी को अपर केस रखते हैं एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट एंड इट सेज दैट नो, the entire string is not in lower case, right? Okay, so this is how it is going to behave. Next to that अगर मैं ऐसे करता हूं print, हाँ, and number करके dot is identifier, ये identifier है क्या? And what are the rules of identifier? Identifier should begin with character, it should not begin with number, it can use only few characters as a special character, that is underscore. तो वो सारा चेक करके देखते हैं. So number, is it a valid identifier? Let's go on checking it. So it goes on returning true, right? Okay, so now let's go on putting the number, some digits into this identifier. Identifier cannot starts with a digit, so let's go on checking कि ये identifier है या नहीं. So it goes on returning what? False. This is not valid identifier. Can I start the identifier with some special symbol? Let's go on checking it out. So when I run this, I'm able to see this outcome as what? False. But can I start it with underscore? Check करते हैं, run करेंगे, and it says that this particular string is what? Valid identifier, right? Okay. Next to that, अभी चेक करते हैं print के साथ I am good. बैकस्लैश एन के साथ चलेंगे. बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर एंड आई एम द बेस्ट, राइट? ओके, ये स्ट्रिंग रखते हैं. डॉट इज प्रिंटेबल, तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर है सारे के सारे प्रिंटेबल है या नहीं, वो हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं, राइट? सो व्हाट विल डू इन दिस केसेस, यहाँ पे ये पार्टीशन वाला पार्ट यहाँ पे लाता हूं. सो द I can see this is printable after this dotted line, right? Okay, let's run this and it goes on returning what? False. क्योंकि यहाँ पे ये जो बैकस्लैश एन कैरेक्टर है वो एस्केप सीक्वेंस है, वो प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, राइट? ओके, सो इसको अगर मैंने निकाल दिया बैकस्लैश एन को एंड ऐसे स्ट्रिंग दिखा, सो आई एम एबल टू सी दैट व्हेन आई रन दिस कोड, I'm able to see that all characters present into this strings are printable characters. This is how it works, right? Okay, next to that, printable की जगह पे can we go with is a title, right? Check करते हैं title, is it in the title case? So it goes on returning what? False. So हम लोग फिर title case कैसे रख सकते हैं? I am good person, right? Okay, let's go on running this and it says that now the string that you are providing is in what? Title case, because हर आपके string के अंदर का जो word है that begins with uppercase letter. This is how it is going to work, right? Okay, now next to that what we are going to do is a space करके function है, उसको भी check करेंगे. And when I run this, so यहाँ पे हम लोगों ने जो string दिया, is it a space? सो इसने कहा फॉल्स, राइट? ओके, इसको टेस्टिंग कैसे करना है? सो जब हम लोग यहाँ पे सिंपली विल कीप ऑन यूजिंग द स्पेसेस एंड व्हेन आई रन दिस, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट हाउ दिस गोज ऑन सेइंग. सो सारे के सारे स्पेसेस है मेरे स्ट्रिंग में,
तब जाके ये दे रहा है व्हाट, इट्स ट्रू। सो बहुत ही सिंपल है, इस करके सारे के सारे फंक्शन जो है आप लोग अपने मशीन के ऊपर 1 by 1 टेस्ट करके देख सकते हो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू वर्क ऑन इट यू आर नॉट वेरी श्योर दैट how this function is going to behave, right? So I hope this is very clean and clear. ऐसे function जो result दे रहे से true and false, and all of them are starting with is. A very fundamental difference you can find within 5 function is alpha numeric, is decimal, is digit and is numeric. उनको जरूर टेस्ट करके देखना है. So that's it from my side about this session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.